हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए, मजे में रह करो। एक जिंदगी के तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो भाई मैं रात के 11 बजे जा रहा हूँ एयरपोर्ट, किसी को पिक करना है। तो कोई स्पेशल ही होगा ना जो 11 बजे अपनी नींद खराब करके जा रहा हूँ। गैस करो कौन हो सकता है। बड़ी सुंदर है, दूर देश से आई है, दूर देश है, पराई मतलब परदेसी है, परदेसी। अब तो बता दो, मेरी सबसे क्लोज परदेसी दोस्त। नहीं पता चला, मिला ही देता हूँ तुम्हें अभी। बस लेट हो जाऊंगा यार, बेचारी की फ्लाइट आने वाली है 15 मिनट में। थोड़ा गाड़ी भगा के चलता हूँ, ठीक है। सोचो यार, सबसे क्लोज, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, जिसके साथ मैं कहीं ट्रिप पे गया था। अब भी नहीं समझ आया। मतलब तुम मुझे पहले से नहीं देख रहे बेशर्मो। समझने वाले समझ गए ना, पहले कमेंट कर देना देखने से पहले, ओके। भाई क्या रोड बना रखी है, भाई क्या रोड बना रखी है भाई। एयरपोर्ट तक ट्रीट है भाई, ट्रीट। आधा घंटा जो तुम गाड़ी चलाते हो ना, 100, 150, 200 की स्पीड चढ़ती नहीं, इस पे चढ़ा देता वरना मैं आज। चलो भाई चलते हैं पिक करने। कोई दूसरे देश से आया भाई, उसको नहीं पता होता यार भारत की चीज़ें। ऐसा नहीं है मैं लड़की के लिए जा रहा हूँ, कोई लड़का बाहर से आता है मैं उसके लिए भी जाता गाइस। नहीं जाता, घंटा नहीं जाता मैं, जाता भाई जाता। समझ रहे हो, चेहरे पे खुशी देख के कौन आ रहा है। अब तक नहीं समझ रहे तो भाई कोई नहीं समझा सकता। रोड पे बीच में गाड़ी छोड़ती है वहाँ तो हो जाएगी ऐसी तैसी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अपना कैब करके चले जाएंगे। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे। बी हैप्पी गाइज, यू हैव वन लाइफ, मेक फ्रेंड्स, चिल विद देम, ठीक है। अब ये नहीं बताओ कौन से गेट से आएगी। ओम नमः शिवाय। 1, 2, 3 गेट हैं भाई यहाँ, किसी ना किसी से तो आएगी ना, ठीक है। यह भाई टर्मिनल 3। कोई भी अगर आपका बाहर से दोस्त आ रहा है तो इसी पे आएगा, क्योंकि सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट बस टर्मिनल 3 पे आती है, ठीक है भाई। यहाँ पे डोमेस्टिक अराइवल्स, ठीक है। आ गया भाई इंटरनेशनल। डोमेस्टिक से नहीं आ रही भाई, वो आ रही है यहाँ पे थाईलैंड से, ठीक है। और ये रास्ता जा रहा है मेट्रो पे, समयपुर बादली भाई। ये अंतर्राष्ट्रीय आगमन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय होता है ना, इंटरनेशनल। डोमेस्टिक हाँ ये भाई, इस पे आएगी भाई। भाई ये तुम्हारे भाई का फिट चेक। लड़की से मिलते हो तुम्हारा भाई लाल पहनता है भाई। टी शर्ट है जूडियो से, पैंट है ज़ारा से, तुम्हारा भाई है अपने घर वालों से, और तुम हो मेरे से, ठीक है भाई। वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं था, वो और कुछ था। डोमेस्टिक को हिंदी में जो बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आगे इंटरनेशनल अराइवल्स गाइस। सॉरी माय बैड। मैं भी सोचूं अब तक क्यों नहीं आई, उसकी फ़्लाइट का टाइम तो हो चुका है। ओह ये है भाई अंतर्राष्ट्रीय डिपार्चर्स गाइस। डिपार्चर कह रहा हूँ, अराइवल। मेरा इंटरनेशनल अराइवल दिख गया। मैं साला डोमेस्टिक में ही खड़ा हूँ। ये देख रहे हो, हमें पिकअप करने के लिए कितने लोग हैं। ओ ओ ओ ओ भाई, कहाँ आ गया मैं। रात के 11:30 बजे भाई, गाड़ी रोड पे खड़ी करके यहाँ आ चुका हूँ मैं। ओह क्रेजी भाई, क्रेजी क्रेजी भाई। क्या हो रहा है भाई। ये रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं क्या हम। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, पटपड़गंज, पटपड़गंज। देख रहे हो। ओ मैं भी सोचूं इंटरनेशनल इतना खाली कर, डोमेस्टिक पे तो लोगों को लेने नहीं आता कोई। ये है भाई इंटरनेशनल। ओए भाई साहब, मोस्टली देख लो भाई कनाडा की फ़्लाइट आती है इस टाइम रात को, इसलिए। ओ जाने जाना, ये तो है। नहीं तो तुम देखोगे ना मोस्टली, देखो एक बार। साडी मानु पुतनी लपने सानू यार बतेरे। ये है भाई। वो आ रही है, वो आ रही है भाई कंबोडिया से। कंबोडिया जो होता है, देखो कंबोडिया, देखो कंबोडिया, कंबोडिया। हांगकांग, हांगकांग, हांगकांग गाइस, हांगकांग एरिया। नहीं के से नंबर है, के से।
ओके 6-7 ये रहा। ओए देरी ये दिखा तो रहा है डिलेड। भाई ये क्या चक्कर है, डिलेड क्यों दिखा रहा है? भाई उसकी फ्लाइट हो चुकी है भाई 1 घंटा डिले। पता नहीं कोई गलत साइट खोली मैंने, जो लाइव ट्रैकिंग दिखाता है ना, आप प्लेन फ्लाई कर रहे हो उसकी लाइव ट्रैकिंग देख सकते हो कहाँ पे है कहाँ पे है। साला जब लैंड हो गया ना, मैं घर से निकला था, मैं बाहर आने में 20-25 मिनट लगेगी, इतने में एयरपोर्ट आ जाऊँगा। भगा भगा के आया 100-150 की स्पीड पे, मतलब 150 तो नहीं जाती, बोल देता हूँ मैं कई बार, बट भाई वो साइट ही साड़ी लोकल लगी मुझे। अब दूसरी साइट पे चेक करा, अभी तो भाई अलीगढ़ है वो, अलीगढ़ से दिल्ली आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अब तो आ गया, मैं यहीं रेस्ट कर लेते हैं भाई, लेके जाऊँगा। बस बाहर नहीं जा रहा, मैं यहीं गाड़ी में बुला लूँगा उसको, मैं गाड़ी में आ जा, इतना कर सकता था तेरे लिए, मैं बाहर जाके देख लिया बस। अब फ्लाइट डिले होगी तो मैं क्या करूँ भाई, है ना? मैं तो चाहता था वो निकले, मुझे देखे, खुश हो, बट क्या करें, बाहर ठंड हो रखी है ना यार। भाई अब बज चुका है रात का 1:30 बज चुका है गाइस। आया था मैं 11 बजे, आ गया था 11, 12, 1, 1:30, तो 2.5 घंटे। साइट साड़ी गंदी मिली ना, अगर साइट वो सही होती ना, आराम से निकलता घर से 1 घंटे का नैप लेके। बाहर गया था पिकअप करने, बट इतना मैं खड़ा नहीं हो सकता, अपना गाड़ी में आके बैठ गया हूँ, यहीं बोल दें यहाँ चाहिए, Zone 6 पोल E। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर मत पालो भाई, सलाह दे रहा हूँ तुम्हें, अपना लोंडो में रहो। 2 घंटे से हम वेटिंग है। आकाश का जिंदगी में वेट नहीं करा इतना, किसी दोस्त का इतना वेट नहीं करा, घर वाले भी कहे ना इतना वेट कर ले छोरी। यार अब क्या करे, उसकी क्या गलती है बेचारी की, गलती तो हमारी है जो हम आ गए हैं। कोई हो, मजाक से हट के दिल की बात बता रहा हूँ, कोई हो, चाहे ना कटरीना कैफ आ रही हो, वो कहे ना 2.5-3 घंटे तेरे को रुकना पड़ेगा, मैं अपना घर जा, हम नहीं आ रहे। आंखों की नींद देखो, रात के 1:30 बज चुका है यार। ये रही भाई लिज हमारी, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, 2 घंटे लेट आई है। Why you so late? First tell me, how are you? I don't know. Huh? Thank you for picking me up. Yeah, Waiting for 2 hours. How was your flight? It was so delayed, honestly. Hmm. Even for my luggage, I was waiting so long. You are looking, Strong? yeah. Very strong. Guys, like I was waiting for her for past 2 hours. I know. Yeah. Thank you. Welcome to India. Thanks. Welcome to Delhi. First time North India, Yeah. huh? Give me your bag, yeah. Thank Did you sleep in the flight? Not really. No. You know, I fell asleep and then she woke me up. Chicken or beef? Chicken or beef? And I'm like, why don't you let me sleep? Then what did you have? Chicken or beef? Lentil. I took vegetarian. You're vegetarian now? No, but I like lentils. Bhai, like you must be staying now 2-3 months here. I have 1 year visa. Huh? 1 year visa. Yeah. So guys, now you know, we'll be shooting content daily. Open the previous door, yeah. Open this. This? Yeah. Oh. So guys, Liz is back in Delhi. Yeah, back in Delhi. It's my first time in Delhi. Sorry. Sorry guys, my bad. So what are your initial impressions like? See the road, see the AQI of Delhi. It's very foggy weather today. Foggy, it's pollution. Where I have to go, Gurugram here only. And you're a crazy driver. Oh my god! Yeah, what happened? Ah, you're a crazy driver. Now guys, after 5 minutes, Liz will drive the car. No. What? This guy's... No. What? Huh? Why is he going backwards? What? That car is going backwards. Why सही में mental Oh है? my god. Why is that car going backwards? I think I took a wrong turn, I guess. Wow. I never saw a car in the middle of the highway going backwards. This is your first time seeing This a is car? National Highway This and is he's a- going backwards. Wow. भाई देख लो उल्टा आ रहा है, जाने वाली रोड है, and he's coming back. This is India Liz. This is Delhi especially. You won't see this in another state. No, I didn't see that in Bangalore or anywhere. They follow rules. Here nobody is like, everyone thinks like road is of my father. Okay. Yeah. Am I safe? You're wearing belt. You're Huh? wearing belt, right? You're Yes. wearing seat belt. Yes. Yeah. Then you're safe.
Okay. Yeah. Liz, you are in safe hands, okay? Okay. Yeah. I'll make you. I'll. क्या कहते हैं उसे? I'll get you alive of Delhi. Okay. Yeah. All right. You know how to drive a manual car, huh? Of course. I'm German. That's how we then go. Put the fifth gear. Fast. Fifth. Come on. No, Okay. Oh, Okay. oh, nice. That was smooth. That was really smooth. Yeah. Yeah. So where are we going, Liz? I don't know. Gurugram. Yeah. Gurugram. Hybrid road, what is it? What are your views on roads of India? Roads of Delhi? The roads itself is good, but your driving is very crazy. It's crazy. You're Yeah, not you're- seeing me you're- driving then. Like it's. I'll show you like when there's traffic. Oh. But Oh! Oh my God! You almost slipped with that car. You were drifting. And everybody's honking. guys, she's German. She knows how to drive better than me. Really. If I'll give her my car, she'll be like zoom, 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 zoom. Oh my God. What have I done? Huh? Getting into your car. You've seen one thing. Like it's 1 a.m. in the morning. No, it's like 2 a.m. in the morning. But still, she has so much energy. I don't know what she eats. Like Liz, what did you have in plane? Like you had something. Yeah, lentils. But you know, I'm coming from Cambodia now. In Cambodia, it's even later. So for me, it's later now than for you. Oh, really? Yeah, that's why I'm very tired. Yeah. So it's like 3 or 4 in the morning, huh? Yeah. Can you not see my face, my eye bags? Can you see mine? Guys, let me ask Liz now, like, what was her favorite food? Last time I asked a few things. Now tell me. I cannot focus. Name 3 Indian. I cannot focus. I'm like worried about my life right now because you're squeezing in between 2 buses and the lorry, and then you brake when you're right in front of the lorry, and then like 6 cars next to each other, Liz. and now you're even on your Liz, phone at the same Liz, time. you are in safe hands. I'm telling you again. If you'll panic, I'll drive fast. So Okay. don't panic, yeah. Okay, please go slow. Okay. Now tell me. 3 Indian dishes. Fast. You don't have to think. Okay, samosa, dal, and mutton curry. Guys, I remember in Goa, she was like, I want to have yellow dal. Yes. She loves dal. I like lentils, yellow dal. yeah. Wherever she goes, lentils. And samosa, you know why she likes samosa? Because she have a song, samosa, that's why. Kina samosa, Kina samosa, una samosa, right? do samosa. Guys, there's one thing I want to tell you. Like when we met for the last time, I'm not having a good time in this car. I'm very scared guys, for my life. when we met for the last time, I told her like, Liz, we should manifest. Like we should hit 1 million. And she was like, Utkarsh, 100k is also very tough. When she met me, I still remember she had around like 14,000 subscribers, I guess, On what? on your YouTube. No, maybe like 30, 40k 30-40k on YouTube Yeah. and on Insta. on Insta. Oh, yeah, maybe like 20k. On Insta, she had 20k. Now she have 200k. Yeah, Huh? 200. Or even more. Even Or more. even more. Yes. Like in 6 months. Yes. So guys, keep manifesting. Things work. Yeah, he asked me, what is your final goal for social media? How much would you be happy with? And I said 100,000 is my end goal. So guys, Thank you. I motivated Liz, and now she gives me 10% cut from her payment. Okay. What? Wait, what? I'm saying I motivated Liz, and now Liz is giving me 10% payment. You already made so much money off me. What are you talking about? Yeah, but most trending video of Can mine. you please look at the street? Please, I'm looking please, please. I'm looking at the street. Oh my God. Let's see. I'm saying. Dude. Chill, Liz, chill. You are in safe hands. I'm telling you again. So guys, yeah, one of the most trending video of mine is like, you can check. You can go to Popular and you'll see. First thing, Liz will come there. Yeah, and I won't come again if we die on this road. Who'll handle your YouTube then, Liz? This last TV. That's me. I'm a TV channel. You should watch it daily. Guys, this is the AQI of Gurgaon. See. What does that mean?
air quality index. Oh, that's really bad. It's 584 and it'll be like 5 in your country. Yeah, it's very bad. It's super bad. So you are inhaling like 100 cigarettes when you're taking a. So I'm healthier if I would live in Germany and smoke cigarettes than if I live here and I don't smoke cigarettes. Yeah, exactly. Oh. If you're living in Germany and you're smoking 100 cigarettes a day, that's equivalent to roaming in Gurgaon, in Wow. Delhi. So guys, yeah, shift to Germany. Why is the so bad though? You have so many trees. There's so many trees, but there's so many people as well, and so many cars as well. Yeah. The ratio of trees and people is like. I'm so glad we're out of this traffic. That traffic was so crazy. That was very scary. Were you also scared? No, that was like free road. There was no traffic. I'll show you traffic tomorrow, Liz. No, I'm not coming. I'm too scared. But guys, I should move to Germany, right? Because the pollution and thing, you know. Being a model, my skin should be healthy. My hair should be healthy. I can't stay here. See the pollution, guys. Are you facing any difficulties like in breathing? Or like it's. Yeah, Liz, I'm looking at the road. Camera is on you. I'm looking Yeah, at but the. the other people are also crazy. Not only you. Now tell me. Tell me. What was the question? My question was like, when you landed in India, Yeah. in Delhi, Yeah. did you face some like, when you took a deep breath, did you felt like particles of pollution going inside you? No. 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 Like she's used to it, guys. I just saw it when I was flying over Delhi. I saw that there was a thick layer of smoke, but when I was breathing, no. It smells normal, like city. And the airport smelled like airport. Yeah, airports smell like airport, airports sound like airport. And flights are delayed like airports. Welcome to Gurgaon, Liz. Thank you. I'm glad I First made tell it me alive. what's the secret of your like energy? Like she haven't slept, guys. In Cambodia it's like 5 in the morning. In Gurgaon it's like 2:30, but still. What's the secret of your energy? I'm very tired. You're very tired. Yeah. But you're looking energetic. I got a lot of adrenaline because I thought I was about to die on the way here. So that helps. Go on, let's go. Open that book. Put your hand like no. Put your hand like this and press the button. That's how 3 Are you showing your followers how to break into your house? Yeah. There's a button, yeah. Go, yeah, you're doing great. See guys. Fight girl breaking into my house. Where? Wait. Easy peasy. Why are you showing your followers how to break into your Nobody knows this place. Guys, she's telling me like last time when she was in India, she only had a backpack. I was like, Yeah. only a small backpack. Now see her bag. Yes. Yeah. Now we are shooting 50 vlogs, please. I won't let you go. Because everybody gave me shit. You're wearing the same dress every day. Does she not have any other clothes? So now I have a lot of other clothes. Go. Welcome. If you want beer or something? No, thank you. Do you have water? Yeah. How do I lock this? It's locked. Just push it, yeah. There's no lock. Just push it, yeah. Guys, there's no food. So guys, yeah, we are super tired. Now we'll sleep. And I'll show Liz Delhi tomorrow. Let's see. I'll take her to some wild places. Cheers. What are you having? Water. No, she's having vodka, guys. She told me to get vodka from. No. Yeah. You always act like I'm such an alcoholic. Yeah, you should drink. When you're young, you should drink because you get the glow. See my face, it's very dull, and see, you can see the wrinkles. See her face. Liz, why you're so red? How come you have red cheeks? I always have that. Jeans. You know, when I was young in high school, when I was maybe like 13, 14, people were making fun of me for it. So I would put powder on top to hide it. Really? Yeah. Anyways. So guys, this is your
home for like whenever you feel like coming. Thank you. Yeah. When I'll go to Germany, I'll also have a home. So guys, yeah. I'm saying say them good night before sleeping here. Good night. And guys, she's so smart. She's so smart. I'll tell you why. Why? I'll tell you. Stop. Okay guys, good night. Bye. See you tomorrow. तो भाई सोने से पहले पीता है तो हमारा भाई आधा किलो दूध, इसमें दूध भर लिया, 1 स्कूप प्रोटीन, बस सो जाते हैं हम. चीयर्स गाइस. ठीक है. तो हमारा भाई सोएगा आज बाहर, वो सोएगी अंदर भाई, क्योंकि यार कर्टेसी होती है. अब मैं तुम्हारे भाई की भाभी है भाई, मतलब तुम्हारी भाभी है, तो किसी को गलत इंडिकेशन नहीं आनी चाहिए. इसका भी बंदा है भाई, तो कभी तुम दिमाग में कुछ सोच के चलो, कुछ नहीं ऐसा. सो जाता हूँ. प्रशांत के रूम में भी प्रशांत ताला लगा के जयपुर गया हुआ है शूट के लिए. जिम्मी भी बॉम्बे गया हुआ है किसी काम से, तो कोई है नहीं, ताला लगा हुआ है. तो भाई सोफे पे सोना पड़ेगा. तो ये है भाई. ठीक है. और कुछ नहीं यार, ध्यान रखो. और ये दोस्त भी जब भी बनते हैं ना, आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती. इसको पता है मेरी कोई इंटेंशन ख़राब नहीं है, आ जाती है. वरना कोई आपके फ्लैट पे आ जाएगा रात के 2 बजे, कोई नहीं आएगा. क्योंकि इंडियन लोगों का जो है ना इमेज बाहर अच्छी नहीं है. अच्छी बनाओ, चढ़ के मत जाओ इन अंग्रेज़ों पे. ठीक है.